अब हम स्टार्ट करते हैं 31 से। क्यों? क्योंकि 30 तक हमारा सेकेंड पार्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 31 से। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन पार्ट वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज, ये पूरा का पूरा टॉपिक वाइज ही चलेगा। अभी जो खत्म होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी का खत्म होगा। इसके बाद चलेगा सेल्स एंड टिश्यूज का। ठीक है, चलिए बने रहिए, स्टार्ट करते हैं 31 से। व्हाट स्ट्रक्चर सेपरेट द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी? इसका आंसर जो होगा ये होगा, देयर इज नो सेपरेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? द पेल्विक कैविटी इज नॉट physically separated from the abdominal cavity. For example, part of the small intestine are located in both cavity. ठीक है, next 32 question number, in which cavities does the digestive system lie? ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, द thoracic, abdominal and pelvic cavity. क्यों होगा? तो ऑसोफेगस जो होता है इज विद इन द thoracic cavity while the remainder is in the abdominopelvic cavity. इसका आंसर इसीलिए सी होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर, imagine an image of the transverse section of the upper arm. What tissue may be identified located from the most superficial to the deepest? इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर मसल, देन बोन। ठीक है, मोस्ट सुपरफिशियल टू द डीपेस्ट, मतलब सबसे ऊपर जो है और फिर सबसे नीचे क्या है उसको इमेजिंग करो और करो। ठीक है, तो चॉइस ए जो है इज इनकरेक्ट होगा, हाइपोडर्मिस इज सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, देन मसल, देन चॉइस सी जो है वो सुपरफिशियल फेसियल, वही है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर, बाय व्हाट anatomical term is head region non cephalic? By what anatomical term is a head region non cephalic? B, the cephalus is the head, the plantar region is the base of foot, the hypochondriac region is inferior, the deep to the rib cartilage of the rib, 7 से 10, the axillary region is the armpit. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर, विच ऑर्गन वुड बी फाउंड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन? कौन सा होगा इसका? तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, स्टमक। विच ऑर्गन फाउंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन? इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, लेफ्ट में स्टमक होता है। नेक्स्ट जो डी का एक्सप्लेनेशन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन इज डीप टू द कार्टिलेज of the lower ribs on our left hand side. The stomach is closest है in the region। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर डी हुआ। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर, टू विच बॉडी रीजन डज popliteal रेफर? popliteal रेफर क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर सी है, द रीजन डोर्सल टू द नी, मतलब डोर्सल से लेकर के और घुटना तक। इसका explanation, here the popliteal artery and poplitealus tendon may be located, choice or refer, A to orbital, B refer antecubital and D refer inguinal। ठीक है, इसका अलग अलग है तो इसका explanation दिया हुआ है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर, which region of the body is known as the acromionial region? The answer is D, shoulder region। इसका आंसर जो होगा वो acromionial region जो है वो shoulder region में होगा। क्यों होगा? The superior part of the shoulder at the distal end of the clavicle is known as acromionial। समझे? Here the acrominion of the scapula articulates with the clavicle at the AC or acrominial clavicular joint। Choice A is the olecranial region, B the clavicular, and C medieval malleus is not usually ascribed a region name। इसका explanation आप पढ़ सकते हैं। Next 38 question number, what are what are the
term of cortex and medulla used to describe. इसमें कौन सा है? इसको वो होगा A. The cortex is the outer part of an organ or bone. Organ or bone. While the medulla is the inner part. और जो medulla है वो क्या है? Inner part. ठीक है? इसका आंसर A होगा. The cortex of the kidney, for example, is a deep and inner part, while the cortex is a more superficial or outer part. ठीक है? Next, 39 question number. What is meant by the term of flaxon? Flaxon or flax? What is meant by term of flaxin? अरे flaxon. इसका क्या होता है? इसका आंसर जो होगा A होगा. Flaxon is the angle between two long bone is decreased by muscle action. ठीक है? To the flex an arm is to decrease the angle between humerus and radius by contracting the biceps brachii. Choice D is wrong. Contracting and tricep is extension arm. ये expansion में पढ़ सकते हैं. ठीक है? Next 40 question number. To what movement is term extension applied? कौन सा movement है? Term जो extension applied होता है. इसका आंसर जो होगा वो C होगा. Extension is where the angle between two long bones is increased by muscle action. इसका आंसर C. To extend the body part is to increase and the angle between the moving bone and the stationary bone. For example, when the fingers of a clenched fist are allowed to strengthen, the angle between proximal flanges and the metacarpals increases. Okay. Next, 41 question number. What exists the potential space between the visceral and parietal layer of a membrane? ठीक है? इसका आंसर जो होगा वो A होगा. Serous fluid. Serous fluid क्या होता है? Serous membrane have a deeper visceral layer and more superficial parietal layer. Between them is a small amount of a serous fluid of lubricate their movement past each other. ठीक है? इसका आंसर जो होगा ये होगा. Next 42 question. On the image taken of mammography of the compressed breast is known as craniocaudal. Craniocaudal. What direction is this? क्या डायरेक्शन होगा? इसका आंसर जो होगा वो D होगा. D होगा. When standing, the breast is compressed from above and below. ठीक है? From above and cranial directions and below जो होगा caudal and tail directions होगा. Next 43 question number. What part of the body is known as popliteal region? इसका आंसर जो होगा वो A होगा of the fold of the knee. ठीक है? Fold of the knee. Then इसका जो आंसर A, behind the knee opposite to the patella is a popliteal region. Here the popliteal pulse and popliteus tendon are found. ठीक है? यहाँ से जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर 2 शुरू होगा. ठीक है? सेल्स एंड टिश्यू का. तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए होंगे तो. तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.